क्लियर आ रही है आवाज। बैकग्राउंड नॉइस है आज तो। इसको ऐसे रखते हैं। क्लियर आ रही है आवाज। बैकग्राउंड नॉइस है आज तो। इसको ऐसे रखते हैं। क्लियर आ रही है आवाज। बैकग्राउंड नॉइस है आज तो। Okay, let's begin then. Can we adjust it a little bit? All right. The inverse head and shoulder, the head and shoulder bottom or the inverse head and shoulder as it. ये मैंने कल भी कवर किया था, पर ठीक है एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे मेरा मेन एम है कि मैं रीडिंग या लर्निंग वाली प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और बाकी तो वीडियो में कवर कर लूँगा मैं डिटेल में, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करते हो चीज़ें तो that requires more efforts, right, and it needs more time. The inverse head and shoulder, the head and shoulder bottom or the inverse head and shoulder as it is sometimes called, is pretty much a mirror image of the topping pattern, as figure 5.2a shows. There are three distinct bottom with the head, middle, trough.
देखो सिंपल सा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर जैसे हमारा हेड कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊपर होता है शोल्डर के कंपैरिजन में, तो वैसे ही हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न में भी ऐसे ही हो रहा है। इससे पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने समझा था, अब ये रिवर्स है तो उल्टा है, यानी कि ये हेड और ये दो शोल्डर हो गए। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे ना तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे जब इसने अपना ट्रफ बनाया था तो उसके बाद उसने एक और अपना जो ट्रफ बनाया, लोअर लो बनाया अपना बेसिकली। उसके बाद जो अगला हाई बनाया वो इक्वल नहीं होगा लेफ्ट शोल्डर के, वो थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे जब वो बॉटम पे आएगा वो ये दोनों के इक्वल आएगा। इक्विवेलेंट बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता मार्केट में कभी भी, तो समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत इक्वल जैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जब ये यहाँ से इस नेकलाइन को ब्रेक करके जाएगा, सो क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे ब्रेक आउट आएगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता तो ब्रेक डाउन आता, ठीक है। मतलब बेसिकली एक पैटर्न से अगर ऊपर जाता है मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे की तरफ अगर ब्रेक करके जा रहा है तो ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके क्या मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आया तो नेकलाइन के जब आसपास आएगा यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और ऊपर जाएगा। अंडरस्टूड। सो दैट्स द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। रिवर्स बोल रहा हूँ मैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। कूल। Example of an inverse head and shoulder. The bottom version of this pattern is a mirror image of the top. The only significant difference is the volume pattern. In the second half of the pattern, the rally from the head should see heavier volume. रिवर्स या इन्वर्स जो हेड एंड शोल्डर है इसमें वॉल्यूम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर था उसमें वॉल्यूम घट रही थी। एक सेकेंड, मेरा लैग कर रहा है, चॉपी सा आ रहा है थोड़ा सा। तो मेरा अपना लैपटॉप नहीं है ये, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है तो ये चॉपी सा हो रहा है। एक मिनट में इसको फिगर आउट करता हूँ सही कैसे करते हैं। विंडोज़ क्लोज कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके नाउ दैट्स फाइन। The most important difference between the top and bottom patterns is the volume sequence. Volume plays a much more critical role in the identification and completion of a head and shoulder bottom. This point is generally true of all bottom patterns. It was stated earlier that markets have a tendency to follow their own weight at bottoms. However, market require a significant increase in buying pressure reflected in greater volume to launch a new bull market. बुल मार्केट यानी कि ऊपर की तरफ, बियरिस्ट मार्केट यानी कि नीचे की तरफ। बहुत फंडामेंटल नॉलेज। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर वहाँ से एक नीचे की तरफ मार्केट आया है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म हो गया है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है नेक लाइन, फिर थोड़ा सा नीचे आके हेड बनाएगा, फिर इक्वल लेंथ पे लगभग जाएगा, तो फिर नेक लाइन से फिर राइट शोल्डर, फिर ये नेक लाइन का जब ब्रेक आउट आएगा तो सिमिलर रेंज पे आएगा, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये रियल मार्केट सिनेरियो है। जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसमें नेकलाइन कंपेरेटिवली स्ट्रेट थी, बट यहाँ पे जो नेकलाइन है वो एक स्लैंटेड वे में होती है, डाउनवर्ड स्लैंटेड। ये रियल मार्केट का एक एग्जांपल दिया हुआ है वीकली चार्ट। हेड एंड शोल्डर बॉटम, द नेकलाइन हैज़ अ स्लाइट डाउनवर्ड स्लैंट विच इज़ normally the case. The pullback after the breakout C arrow nicked the neckline a bit, but then resumed the uptrend. A more technical way of looking at this difference is that a market can fall just from inertia, lack of demand, or buying interest on the part of traders. आप में से कोई टेक सेवी है तो लेट मी नो कि एक चॉपी लैपटॉप को सही से वो चले कैसे बना सकते हैं हम। ये लाइव में थोड़ा थोड़ा चॉपी हो रहा है, अगर किसी को टेक्निकल आइडिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट प्लीज़, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। क्योंकि मैंने लेफ्ट में अपना फ़ोन रखा हुआ है, मैं उसमें देख रहा हूँ वीडियो मेरी बफर कर रही है। मोर टेक्निकल वे ऑफ लुकिंग एट दिस डिफरेंस इज दैट अ मार्केट कैन फॉल जस्ट फ्रॉम इनर्शिया, lack of demand or buying interest on the part of traders is often enough to push a market lower
but the market does not go up on inertia. Prices always prices only rise when demand exceeds supply and buyers are more aggressive than sellers. The volume pattern at the bottom is very similar to that at the top of for the first half of the pattern. This is the volume at the head is a bit lighter than that at the left, so that the rally from the head, however, should begin to show not only an increase in trading activity but the dip to the right shoulder should be on very light volume. The critical the neckline at the top usually slopes slightly upward. Sometimes, however, it is horizontal. In either case, it doesn't make too much of a difference. Once in a while, however, a top neckline slopes downward. This slope is a sign of market weakness and is usually accompanied by a weak right shoulder. However, this is a mixed blessing. The analyst waiting for the breaking of the neckline to initiate a short position has to wait a little bit longer because the signal from the down sloping neckline occurs much later and only after much of the move has already taken place. For basing pattern, most necklines have a slight downward tilt. Rising neckline is a sign of greater market strength. A rising neckline is a sign of greater market strength, but with the same drawback of giving a later signal. Complex head and shoulder pattern. A variation of the head and shoulder pattern sometimes occurs, which is called the complex head and shoulder pattern. These are patterns where two heads may appear or a double left and right shoulder. These patterns are not that common but have the same forecasting implications. A helpful hint in this regard is the strong tendency towards symmetry in the head and shoulder pattern. This means that single left shoulder usually indicates a single right shoulder. A double left shoulder increase the odds of a double right shoulder. Tactics. Market tactics plays an important role in all trading. Not all technical traders like to wait for the breaking of the neckline before initiating a new position. As figure 5.3 shows, more aggressive traders believing that they have correctly identified a head and shoulder bottom will begin to probe the long side during the formation of the right shoulder, or they will buy the first technical signal that the decline into the right shoulder has ended. Figure 5.3, this one. Okay, so market was in a downtrend. Then here comes head and shoulder, right? So this and this is neckline. Wait a second. Tactics for a head and shoulder bottom. Bottom. And technical traders will begin to initiate long position while the right shoulder E is still being formed.
is still being formed. One half or two-thirds pullback of the rally from points C to D, a decline of the same level as the left shoulder at point A, or the breaking of a short-term down trend line. Line 1. All provide early opportunities for market entry. More position can be added on the breaking of the neckline or the return move back to the neckline. Right. Okay, so let's just read it out first, then we'll get a better idea of it. And अगर मैं इसका सिंपल एनालिसिस यहाँ पे करूँ तो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया प्रॉपर, यहाँ पे मार्केट ने एक अपना पीक बनाया, फिर नीचे एक ट्रफ बनाया है जो लोअर लो भी है, फिर एक पीक बनाया जो प्रीवियस के कंपैरिजन में बहुत ऊपर है, और फिर से यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आ रखा है, और फिर जब नेकलाइन के आसपास आया तो उसको ब्रेक करके ओके Market tactics plays an important role in all trading. Not all technical traders like to wait for the breaking of the neckline before initiating a new position. Make completely sense. As figure 5.3 shows, more aggressive traders believing that they have correctly identified a head and shoulder bottom will begin to probe the long side during the formation of the right shoulder, or they will buy the first technical signal that the decline into the right shoulder has ended. Some will measure the distance of the rally from the bottom of the head, point C to D, and then by a 50% or 66% retracement of that rally. Still, this would draw a tight down trend line along the decline from points T to E and by the first upside break of the trend line. Because these patterns are reasonably symmetrical, some will buy into the right shoulder as it approaches the same level at the bottom of the left shoulder. A lot of anticipatory buying takes place during the formation of the right shoulder. If the initial long proves to be profitable, additional position can be added on the actual penetration of the neckline or on the return move back to the neckline after the breakout. The failed head and shoulder pattern. Once prices have moved through the neckline and completed a head and shoulder pattern, prices should not recross the neckline again. At a top, once the neckline has been broken on the downside, any decisive close back above the neckline is a serious warning that the initial breakdown was probably a bad signal or a fake out basically, and creates what is often called, for obvious reason, a failed head and shoulder. This type of pattern starts out looking like a classic head and shoulder reversal, but at some point in its development, either prior to the breaking of the neckline or just after it, prices resume their original trend. Tactics for a head and shoulder bottom. Many technical traders will begin to initiate long position while the right shoulder E is still being formed. This one E is still being formed. One half to two-thirds pullback of the rally from points C to D, a decline to the same level as the left shoulder at point A, or the breaking of a short-term downtrend line, line 1, all provide early opportunities for market entry. More positions can be added on the breaking of the neckline or the return move back to the neckline. There are two important lessons here. The first is that none of these chart patterns are infallible. They work most of the time, but not always. The second lesson is that technical traders must always be on the alert for chart signs that their analysis is incorrect. One of the keys to survival in the financial market is to keep trading losses small and to exit a losing trade as quickly as possible. One of the greatest advantages of chart analysis is its ability to quickly alert the trader to the fact that he or she is on the wrong side of the market. The ability and willingness to quickly recognize trading errors and to take defensive action immediately are qualities not to be taken lightly in the financial market. Because if you'll survive, then only you'll be able to grab a good opportunity in the future. The head and shoulder as a consolidation pattern. Before moving on the next price pattern, there's one final point to be made
on the head and shoulder. We started the discussion by listing it as the best known and most reliable of the major reversal pattern. You should be warned, however, that this information can on occasion act as consolidation rather than a reversal pattern. When this does happen, it's the execution rather than the rule. We'll talk more about it in chapter 6, continuation patterns. Triple tops and bottoms. Most of the points covered in the treatment of the how long we have been here for. Let's cover triple top and bottom. Most of the points covered in the treatment of the head and shoulder pattern are also applicable to other types of reversal patterns. See figure 5.4a to C, the triple top or bottom, which is much rarer in occurrence, is just a slight variation of that pattern. अच्छा ये पढ़ लेते हैं ट्रिपल टॉप्स वाला कर लेता हूँ are also available in the other types of reversal patterns. See figure 5.4 A to see the triple top or bottom, which is much rarer in occurrence, is just a slight variation of that pattern. The main difference is that three peaks or troughs in the triple top or bottom are at the same level. Chartists often disagree as to whether a reversal pattern is a head and shoulder or a triple top. The argument is academic because both patterns imply the exact same thing. The volume tends to decline with each successive peak at the top and should increase at the breakdown point. The triple top is not completely complete until support levels along both of the intervening lows have been broken. Conversely, prices must close through the two intervening peaks at the bottom to complete a triple bottom. As an alternate strategy, the breaking of the nearest peak or trough can also be used as a reversal signal. Heavy upside volume on the completion of the bottom is also essential. ट्रिपल टॉप देखो तीन पीक बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक ही लेंथ पे बन रहे हैं ठीक है और जैसे ही इसकी नेकलाइन का ब्रेक डाउन आएगा और इसके आसपास दोबारा से नेकलाइन आएगी तो वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो क्योंकि मार्केट वहाँ से गिरेगा ठीक है so that is triple top for you. A triple top similar to the head and shoulder except that all the peaks are at the same level. Each rally peak should be on lighter volume. Okay, तो इसमें जितनी वॉल्यूम होगी उससे कम इसमें होगी उससे कम इसमें होगी. The pattern is complete when the both troughs have been broken or heavier volume. ठीक है जो ये ब्रेक आया ये वाला और इसके बाद जो ये वाला ब्रेक आया इसके केस में वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए. The measuring technique is the height of the pattern projected downward from the breakdown point. Return moves back to the lower line are not unusual. Okay, makes sense. A triple bottom similar to a head and shoulder bottom except that each low is at the same level. A mirror image of the triple top except that volume is more important on the upside breakout. तो वॉल्यूम बढ़ेगी इसके बाद यहाँ जब अपसाइड ब्रेकआउट आएगा. रियल मार्केट में भी आपको एग्जांपल दिया गया है. मार्केट नीचे की मतलब पहले तो थोड़ा सा अप ट्रेंड में था फिर नीचे की तरफ आया और ऐसे ट्रेड करते हुए एक बॉटम दो बॉटम और तीन बॉटम सेम हाइट पे बनाए. तो अब होगा क्या ये जो हमारे बॉटम बने इनकी जो वो है हमारे पास क्या बोल सकते हैं ट्रफ्स हैं उनको हम ऐसे जॉइन कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो मार्केट इसके बनने के बाद जब वहाँ पे बनाएगा जाएगा आराम से ओके मार्केट में ब्रेकआउट आया फिर. A triple bottom reversal pattern prices found support just below 3 times on this chart before launching a major advance. The bottom formation on this weekly chart lasted 2 full years, thereby giving it major significance. We've learned it in the previous chapter, right? The more time market spend at a particular position or at a particular range, the more significance of that range will become ultimately. So yeah, that's one thing that we have to understand. The measuring implication is also similar to the head and shoulder and is based on the height of the pattern. Prices will usually move a minimum distance from the breakout point at least equal to the height of the pattern. Once the breakout occurs, a return move to the breakout point is not unusual because the triple top or bottom represents only a minor variation of the head and shoulder pattern. We won't say much more about it here. Then comes double tops and bottoms. We'll cover it in next live because now I'm feeling a lot sleepy. I don't know what happens.
what happened basically. So yeah, gotta go. I'll have to take a nap, I feel like. So we'll cover this double tops and bottoms from the next live onwards. Bye bye, whoever joined. Have fun. Take care. Peace out. And yes, if you are into stock market or trading, make sure that you are checking out the channel once. And if you feel like it is adding any value to your life, make sure that you are liking, sharing, and most importantly, subscribing to the channel. Only if you are interested in stock market. Otherwise, please don't. You know, please don't subscribe if you don't have any interest in stock market. But if you have any um, interest is interest in stock market, not only stock market but also in what I can say, finance. So I cover my contents mostly in Hindi. So मेरा हिंदी में कंटेंट होता है, इवन दो द बुक इज़ इन इंग्लिश. सो माई जनरल आइडिया इज़ कि मैं इसको कवर करूँ और उसको एक्सप्लेन हिंदी में कर लूँ. तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, उससे रिलेटेड, तो मैं वो अपने चैनल पे कवर कर रहा हूँ. आजकल कुछ दिनों से मैं लाइव ही आ पा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. तो जो वीडियो बनी हुई थी वो भी मेरी चली गई. वहाँ पे हम बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ कवर कर रहे थे जिसमें हम यही बुक को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चल रहे थे. तो वो मैं रिज्यूम करूँगा जल्दी से. और वैसे भी उसके अलावा भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, बाकी कंटेंट भी आएगा, जैसे जो करंट सिनेरियो से चल रहा है या बाकी चीज़ों से जो चल रहा है वो भी हम मैनेज करेंगे. तो या whoever is joining for the first time, make sure that you are checking out the channel. And in case if you are in stock market in any sense or in finance, subscribe to the channel and also like the live stream so that next time it will come in your feed and you can join again. Alright, let me know where are you all from, like कहाँ से आप लोग हो. अगर कोई interaction के लिए, if anyone is up for interaction, then yeah, I can be here for a while before ending the live. Otherwise, make sure that you are checking out the channel. Check out certain contents. लास्ट एक दो दिन के आपको थोड़ा सा जो शॉर्ट्स हैं वो भी ऐसे ही मिलेंगे न्यूज़ बेसिस पे. या उससे पहले मैं ऐड ऑन कर रहा था कुछ दो तीन शॉर्ट्स. अगर हटा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था. लास्ट कुछ दिन से टेक्निकल इशू है लैपटॉप वगैरह में. तो या इवन नाउ ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग माई रियल लैपटॉप. सो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है. तो अगर आप में से किसी को अगर आइडिया है कि लैपटॉप की वर्किंग कैसे फास्ट करी जा सकती है, कोई टेक सेवी टाइप का बंदा है, तो वो भी बता दो प्लीज़. Anyone in the chat? No, nothing. All right. So yeah, लैपटॉप में जनरली हुआ क्या, वो मेरे से गिरा और उसमें कुछ डैमेज ना हो जाए करके मैंने उसको जल्दी से बंद कर दिया. तो जब वो गिरा उसके बाद वो प्रॉपर चल रहा था. तो जब मैंने बंद करा तभी प्रॉपर चल रहा था. उसके बाद वो रीस्टार्ट ही नहीं हुआ. मतलब खुला तो फिर वो उधर चले गया था. मैं टर्म भी भूल गया. मतलब वो अपने आप से प्रोसेस कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम आई है. फिर वो एडवांस सिक्योरिटी वगैरह वो सारे इशू में चली गया. ब्लू स्क्रीन हो जा रही थी. अभी भी मैं ओपन कर रहा हूँ तो घूमते रह जा रहा है. ऑटोमेटिक रिपेयर वाले जोन में चल जा रहा है. अगर किसी को कोई आइडिया कि कैसे वो रिजॉल्व होता है तो फिर लेट मी नो. बाकी मैंने थोड़ा बहुत अपने एंड से देखा भी कैसे होता है क्या होता है. तो शायद उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सीन है. सो विल फिगर इट आउट. सामने पड़ा है दूसरा लैपटॉप भी. और इस वाले में क्या हो रहा है कि मैंने वेब कैम भी लगाया हुआ है. और ये पहले तो इसमें माइक में ही आवाज़ नहीं आ रही थी. अभी थोड़ा सा इसमें वो भी सुनाई दे रहा होगा, जो बजिंग साउंड है वो भी आ रही होगी नॉर्मल हेडफोन से भी, इवन दो हेडफोन कनेक्टेड है. पता नहीं क्या इशू है. सो या आई एम फिगरिंग आउट थिंग्स. एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक एज इन स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड, तो यू कैन लेट मी नो. ओके, राइट. सो शेल वी. अच्छा, 1 मिनट बचा है, 30 मिनट हो जाएंगे. तो शेल वी लाइक कंटिन्यू और लाइक व्हाट्स द सिचुएशन. 1 मिनट के लिए और रहते हैं. लाइव में 5 लोग हैं आई गेस. सो 5 के 5 लोग अगर लाइक दबा देंगे तो लाइक काउंट बढ़ जाएगा. पर लाइक तभी दबाना जब आपको स्टॉक मार्केट और उससे इंटरेस्ट है तभी. मैं अपनी ग्रोथ तो चाहता ही चाहता हूँ. मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैं अपनी ग्रोथ चाहता हूँ. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी उसको, चैनल को या फिर लाइव को तब लाइक करो जब आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है. जैसे अभी मैं ये बुक पढ़ रहा था, अभी बहुत ऐसा नीट टाइप की आ रही है. तो मैं सोऊंगा, उसके बाद से मैं दोबारा आऊँगा शायद, आई गेस. सो ये बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जिसको बाइबल ऑफ ट्रेडिंग भी बोला जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस बुक की. हम इसके पेज नंबर
आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में आई गेस क्लियरली। कितने पेज नंबर पे हैं बताओ हम भी? 121 पेज नंबर पे हम। तो 120 पेजेस हमने इसके कवर कर लिए हैं। वी आर ऑन 121। सो या दैट्स दी अपडेट। और इसके अलावा तो हाँ, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझी, और आगे आने वाले चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, तो उसको भी हमने कवर करना है। तो हाँ, फॉर दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल and like the live stream as well. Okay, so yes, let's call it a, not call it a day, let's just end this live on a positive note. All right, light भी चलेगी. Okay, so inverter पीप करेगा थोड़ी देर तक. Okay, all right, so thank you so much for joining in. You can check out the channel, please check out the channel. That's my humble request. फिर उसके बाद you can decide if it is going to add any value to your life, then you can subscribe to it, otherwise you can skip, that is completely fine as well. But do check out the channel. Okay, if any suggestions, anything that you want to share, I am up for it. In the next live you can tell me that. And have fun. Peace out. Thank you so much, universe. Thank you so much, Ranji. Have fun. Peace out.